Good morning and assalamu alaikum, my students, my fellows. How are you? Hope you fine. Today our topic is the piece of string. Next translation with synonyms. Translation with synonyms. Okay, so let's start. Words and synonyms. And so let's start. Next passage. Where is next passage? Yes. Next, the mayor's asked serious. The mayor asked serious man was waiting for Hubert. Hubert, he said, you were see this morning to pick up the pocketbook lost by Mr. James. And Mr. Hubert, the simple countryman, looked at the mayor, astounded and already terrified by the suspicion. Okay, and then yes, resting on him. Why me? Me picked up the pocket book. Yes, you yourself. By my word of honor, never hear of it. But you were seen. ओके, मेयर, ये मेयर जो था वो एक क्या कहते हैं, एक फैटी मैन था, फैटी एंड एक सीरियस आदमी था जो मेयर था. एंड मिस्टर ह्यूबर्ट जो था वो मिस्टर ह्यूबर्ट का क्या कर रहा था, इंतज़ार कर रहा था. और उसने कहा, मिस्टर ह्यूबर्ट, तुम्हें आज सुबह मिस्टर जेम्स का जो है वो गुमा हुआ जो वॉलेट है वो उठाते हुए उसने देखा है. किसने? मिस्टर जेम्स का गुमशुदा पर्स जो है उसने वॉलेट उठाते हुए देखा है. मिस्टर ह्यूबर्ट जो कि एक सिंपल मैन है एंड सिंपल एंड विलेजर, एंड वो देख के मतलब कि वो शॉकिंग में चला जाता है ना वो. फिर वो क्या कहता है कि ऐसे देखने लगा, वो अपने ऊपर होने वाले इस शक व शुबा की वजह से पहले से ज़्यादा जो है वो क्या हो जाता है, खौफज़दा, फियरफुल हो जाता है, खौफज़दा हो जाता है. क्योंकि मैं इट्स हिज वर्ड्स, मैं बिकॉज ही इज़ इन अ शॉकिंग.
मैंने वो वॉलेट नहीं उठाया। जी हाँ, तुमने खुद उठाया। मुझे अपनी इज़्ज़त व वक़ार की कसम कि मैंने उसके बारे में कभी सुना तक नहीं, मगर तुम्हें देखा गया था। ओके, सो we should synonyms. Remember, recall, okay, recall and reminder. Sorry. And then understand see, comprehend, appreciate, figure out, catch, realize, get. Understand, catch, realize, and get. And next, flush, blush, redden, turn red, stir, glow, trust, count on, rely on. Flush, blush, and next, believe, trust, depend on. Believe, trust, depend on. Flush, blush, and burn. Next. And next, worthy, good, honest, decent, okay, honorable, and reliable. Worthy, honest, reliable, and decent. Next, mistake, get wrong, misjudge, and miscalculate. Mistake, misjudgment, and wrong. Okay.
core on the string, core. So core where? Core string row. Core string row line and cable. Okay, and next, so there and right. Okay, next, spit furiously furiously heatedly and angrily. Okay, and the next, spit, shoot, spew, spout, jet. Spit, shoot, jet. And attest, testify, verify, prove. Okay, attest, verify, proof, and the next, exasperating, angry, annoyed, cross, furious, heated. Okay, are you seeing? Okay, students, exasperating, angry, annoyed. Okay, just it. And the next, salvation, redemption, saving, rescue, and choke, smother, stifle. Choke, smother, stifle. And take away, disposes, strip, rob. Take away, words. Take away,
टेक अवे द नेक्स्ट स्ट्रिप रोब deprive reputation respect okay and honor, good name, fame, esteem, renown. Okay students, so there are much synonyms. Non, repute, okay, and the next passage. I was seen with the pocket book, and who saw me? Mr. Manana, the harness man saw you pick up the pocket book. Mr. Hubert, the old man, remembered, understood, and flushed with anger. Oh, him! Yes, he saw me pick up this string here, and as he said so, he drew out the title piece of string from his pocket, but he merely shook his head and said, "You will not make me believe." And that Mr. Manana, who is a man of worthy credence, mistook the code for a pocket book. Okay. Yes, मुझे वॉलेट के साथ और पर्स के साथ देखा गया था, यानी कि मिस्टर ह्यूबर्ट जो है उनका जो था वो पुलिस वाले से इस तरह वो पूछ रहे हैं क्वेश्चनिंग में कि क्या मुझे पर्स के साथ देखा गया था. सो किसने मुझे देखा था? मिस्टर मनाना, जो कि एक क्या कहते हैं, एक गाड़ी का साजो सामान बनाने वाला है. वो इंसान क्या है, और उसने तुम्हें अपना पर्स उठाते उसने देखा है, वॉलेट उठाते देखा. सो मिस्टर ह्यूबर्ट, जो कि एक ओल्ड मैन आदमी था, उसने कुछ याद किया और बात उसकी समझ में आ गई. यानी कि मिस्टर ह्यूबर्ट ने क्या किया, जब ये बात हुई तो मिस्टर ह्यूबर्ट को फ़ौरन उसका माइंड क्लिक किया कि मैंने नीचे से क्या उठाया था उस वक्त, और फिर उसको याद आ गया कि उसने क्या उठाया था. बट ही इज़ अ वेरी एंगर एंड हर फेस इज़ अ रेड. ओके, सो उसकी समझ में आ गई और वो गुस्से से कहते हैं कि सुर्ख चेहरा सुर्ख हो जाना. एंड ओह, तो उसने मुझे देखा. हाँ, उसने मुझे ये रस्सी उठाते हुए देखा था. और जब उसने ये बात कही तो उसने अपनी पॉकेट से रस्सी का वही टुकड़ा निकाल लिया. बट मेयर ने नफ़ी में सर हिलाया और क्या कहा, तुम मुझे ये यकीन नहीं दिला सकते. और मिस्टर मनाना, जो कि एक काबिल-ए-एतबार भरोसे वाला आदमी है, उसने गलती से जो था वो क्या किया था, रस्सी को
क्या समझा? वॉलेट समझा, पर्स समझा. ओके. कोट and here is a quote. The students have complete word synonyms. Some, yes. And the next, Mr. Hubert, the peasant furiously lifted his hand, spat at one side to attest his honor, and said in the most exasperating tone, गुस्से वाला, गुस्सीला आवाज़ या गुस्सीला जो है बिहेवियर, टोन, angrily tone, understand? Exasperating, angrily tone, show to angrily. And it is nevertheless so truth of good God, the scared truth. I repeat it on my soul and my salvation. After picking up the object, you stood there, looking a long while in the mud to see if any money had fallen out. मिस्टर ह्यूबर्ट, जो कि एक क्या है, एक फार्मर है. पीसेंट होते हैं, एक फार्मर होता है, एक होता है पीसेंट मीन छोटा किसान कह लें आप उसको ना. एक फार्मर जो होता है जो हाई लेवल पे जो काम करता है उसको वो होता है फार्मर. यह है पीसेंट यानी कि छोटा किसान. एंड तो उसने गुस्से से अपना हाथ बुलंद किया और अपनी इज़्ज़त व वक़ार की तस्दीक के लिए एक तरफ उसने क्या किया, गुस्से से उसने स्पिट किया, स्पिट ऑन द अर्थ, स्पिट ऑन अ फ्लोर, सॉरी. और अपनी इज़्ज़त व वक़ार की तस्दीक की तरफ उसने स्पिट किया और क्या किया, और इंतहाई गुस्सीले लहजे में कहा, सच्चा रब गवाह है कि ये सच है, बिल्कुल मुक़द्दस सच, ट्रूथ ऑफ गॉड एंड द स्केयर्ड ट्रूथ, मुक़द्दस सच, स्केयर्ड ट्रूथ, मुक़द्दस सच, ओनली ट्रूथ, गुड ट्रूथ, सच, बट स्केयर्ड ट्रूथ मीन मुक़द्दस सच. मैं दोबारा अपनी रूह और अपनी निजात की कसम पर ये बात दोहराता हूँ कि वो पर्स उठाने के बाद and next passage, yes, there was no use in Mr. Hubert protesting, for nobody believed him. Mr. Manana repeatedly maintained that Hubert had picked up the pocketbook for an hour. Both men abused each other. Then, at his own request, Mr. Hubert was searched. Nothing was found on him.
मिस्टर ह्यूबर्ट जो है था उनका क्या कहते हैं उनका एहतजाज जो था वो क्या हुआ, बेसूद साबित हुआ, क्योंकि किसी ने भी उनकी बात पे यकीन नहीं किया। और मिस्टर मनाना जो थे वो क्या करते हैं, क्या करते रहे हैं, मुसलसल जो हैं वो अपनी बात पर कायम थे कि ह्यूबर्ट ने पर्स उठाया है। मिस्टर मनाना जो थे वो क्या इसी बात पे वो थे, आर्गुमेंट करते जा रहे थे कि वो उन्होंने पर्स उठाया है। और 1 घंटे तक दोनों आदमी एक दूसरे को क्या कह रहे थे, अब्यूज़ कर रहे थे, बुरा कह रहे थे। एंड देन फिर उनकी क्या कहते हैं रिक्वेस्ट पे क्या हुआ, मिस्टर ह्यूबर्ट की तलाशी ली गई और उसके पास से भी कुछ ना मिला। एंड देन आफ्टर नेक्स्ट फाइनली द मेयर discharges Hubert with warning that he would consult the public prosecutor and ask for further orders. As he left the mayor's office, people surrounded and questioned him with serious curiosity, and nobody believed his story of the string. Instead, people language at that's with serious curiosity. Okay, so आखिरकार क्या फाइनली मेयर ने इस वार्निंग को क्या किया, मिस्टर ह्यूबर्ट को निकाल दिया कि वो एक वकील से मशवरा करें एंड मज़ीद अहकामात का मुतालबा करेंगे। और जो ही उसने मेयर के ऑफ़िस को छोड़ा, लोग उनके इर्द गिर्द जमा हो गए और नहायत क्यूरियसली क्या किया, उन्होंने उससे सवालात पूछने लगे मिस्टर ह्यूबर्ट से। और किसी ने भी उसकी रस्सी की कहानी पे यकीन ना किया। यानी मिस्टर ह्यूबर्ट जो थे वो मुसलसल जो है यही कहते जा रहे थे कि मैंने कुछ नहीं उठाया, मैंने पर्स नहीं उठाया, बट वेस्ट, क्योंकि वो कोई भी उनकी बात पे यकीन नहीं कर रहा था। बल्कि लोग उस पे हंसने लगे और बल्कि लोगों ने उसका मजाक उड़ाया। एंड देन नेक्स्ट मिस्टर ह्यूबर्ट वेंट अलोंग स्टॉपिंग हिज फ्रेंड, गिविंग देम हिज स्टेटमेंट एंड प्रेजेंटेशन, टर्निंग his pocket inside out of proof that he had nothing. All they said was, "You old rascal, get out of here, old rascal." Mr. Hubert went to the village, telling every man he knew about his adventure, but he only met with it all made him ill. Incredulity all made him all. The next day in the afternoon, a man named George returned the pocketbook and its contents to Mr. James, the owner of the pocketbook. मिस्टर ह्यूबर्ट राह चलते हुए अपने दोस्तों को रोक कर और फिर अपना वो क्या स्टेटमेंट दे रहे थे कि और ये साबित करने के लिए कि उसके पास कुछ नहीं है।
अपनी पॉकेटें उलट कर दिखाता रहा, लेकिन उन्होंने जो कुछ भी कहा वो ये था, और वो उनको यानी कि अब्यूज़ कर रहे थे। मिस्टर ह्यूबर्ट को वो सब लोग अब्यूज़ कर रहे थे और उनकी बात को कह रहे थे यानी कि यहाँ से गेट लॉस्ट हो जाओ, तुम यहाँ से गेट आउट हो जाओ और यहाँ मत रहो। मिस्टर ह्यूबर्ट गौन चले गए और अपने मामले के बारे में जितना जानता थे हर एक को बताते रहे, मगर उसे महज बेतमादी मिली। इस सारे वाक़े ने उसे बीमार कर दिया और अगले दिन दोपहर को जॉर्ज नामी शख्स ने जो था वो क्या वॉलेट पर्स और उसमें क्या थी जो पेपर थे बिज़नेस पेपर, वो सारे पर्स के मालिक को मिस्टर जेम्स को लुटा दिए। सो नेक्स्ट, जॉर्ज क्लेम टू हैव फाउंड द पॉकेट बुक on the road to the village market, but not knowing how to read, he had given it to his employer. And Mr. जॉर्ज ने वो शौक के साथ कहा कि उसे ये पर्स गांव की मार्केट को जाने वाली रोड पे मिला था, मगर क्योंकि उसे पढ़ना नहीं आता था इसलिए उसने ये पर्स अपने मालिक को दे दिया था। सो नेक्स्ट, the news spread like fire in the neighborhood. Mr. Hubert was also informed. He was in trouble. He was triumph. Where is triumph? No to taking itself laying. Grieve me as much was not the thing itself as laying. There is nothing so shameful as to be called a liar. ये खबर कहते हैं कि आग की तरह इर्द गिर्द में फैल गई, जंगल में जैसे आग लगती ना स्पीड के साथ। सो मिस्टर ह्यूबर्ट को भी इसकी इत्तला दी गई और वो सुरखरू हो गया था। वाई? जिस चीज़ ने मुझे इतनी तकलीफ़ पहुंचाई वो बज़ाते खुद वाक़या नहीं था, बल्कि वो झूठा इल्ज़ाम था, और झूठा कहलवाने से ज़्यादा कोई शर्मनाक बात ही नहीं। एंड नेक्स्ट, whatever reason he gave, people were not willing to believe him. Those are laying excuse, they said behind the back. Hubert felt his shame and disgrace, his self-esteem and practice, and he consumed his heart over this and wasted away, and before the very eyes of people, because Mr. Hubert की सेल्फ स्टीम ग्रेसलेस हुई थी, इसलिए वो बंदा क्या हुआ, वो टूट गया। सो मिस्टर ह्यूबर्ट ने उसे अपनी इज़्ज़त नफ्स और करदार उसने दलाइल दिए लोगों को, और उस पर यकीन करने वालों कोई भी तैयार ना था, और वो झूठे उज़र यानी कि लेम एक्सक्यूज़ेस बहाने हैं। वो सब लोग क्या कह रहे थे उसके बारे में कि ये बंदा जो है यानी कि मिस्टर ह्यूबर्ट जो है ये लेम एक्सक्यूज़ेस दे रहा है, कोई भी उसकी बात पे यकीन करने को तैयार नहीं था, बिकॉज ही इज़ अ सिंपल मैन। ओके स्टूडेंट्स, एंड यू what you about at the end of the story, because that's a very interesting but moral story.
too much. मिस्टर ह्यूबर ने उसे अपनी इज़्ज़त नफ्स और किरदार और ज़िल्लत रसवाई का ख्याल किया, इस बात पर कि उसका दिल जो था वो लोगों की आंखों के सामने खुल कर मरता रहा। आंखें यानी कि वो कह रहा था वेस्टेड अवे, कि सब कुछ वो बता रहा था और उसे ऐसे लग रहा था मैं सब कुछ वेस्ट हो रहा है। वो लोगों को अपनी एक्सप्लेनेशन दे रहा था अपने सच के लिए, बट वेस्ट बिकॉज दे आर कॉलिंग आर लायर and pickpocket. So next, people stare to tell the story of the string to amuse themselves and told it in a manner of soldier who had seen on the campaign and told about his battles. Hubert mind, touched to the depth, began to watch day by day. Towards the end of the month, he took his bed. He died in the first week of following month, and in the delirium of his death struggles, reiterating his innocence, reiterating. क्या था? अब जी बहलाने के लिए लोगों ने इस रस्सी की कहानी सुनाना शुरू की, और ये कहानी एक ऐसे सिपाही के अंदाज में बताते कि जैसे कि वो किसी क्या कहते हैं, किसी वार के बारे में बता रहे हैं, किसी महाज के बारे में जैसे वो लड़ रहे हों, और अपनी लड़ाइयों का जिक्र करते। एंड आई एम श्योर they were enjoying for this story, for a life story. Okay students, तो वो इंजॉय कर रहे थे इस चीज़ को, उसकी यानी कि उसकी ट्रू मिस्टर ह्यूबर was a true man, but he is a lame excuses, but those people are lame excuses for and enjoying for her personality. ये बातें मिस्टर ह्यूबर्ट को रूह को घायल कर गईं, और वो क्या हुआ, रोज़ बरोज़ उसकी नींदें ख़राब होती गई, हराम हो गई, और महीने के एंड तक वो बिस्तर से लग गया। उसने इतनी टेंशन ली कि वो बिस्तर पे बीमार हो गया, और अगले यानी कि नेक्स्ट मंथ में उसने क्या किया, पहले हफ्ते में क्या हुआ, फिर वो सैड, वो मर गया, फोत हो गया। मौत व हयात की कश्मकश में मुब्तला आलम ज़िया में वो अपनी बेगुनाही, इनोसेंस क्लेमिंग, दावा करता रहा। वो किस चीज़ का? अपनी इनोसेंस का, बेगुनाही का, बट बार बार वो दोहराता रहा, रिटेटिंग देता रहा उनको, बार बार दोहराता रहा इस बात को, बट वेस्ट। A piece of string, but my word of honor, I did not lie. रस्सी का एक टुकड़ा, रस्सी का टुकड़ा। क्या हुआ कि मुझे वो कहता है कि मुझे अपनी इज़्ज़त की कसम, मैंने झूठ नहीं बोला था। And he died, it said that great flood in the great wrath. In the great wrath, carried away people and all their belonging. The grave of Hubert withstood the havocs and of the flood. It was engraved on his tombstone. Year after his death, here lies
a wise man who told nothing but truth. Here lies the man who would not prove his innocence, but the flood proved it. Understand, students? यानी कि वो एंड तक यही कहता रहा और एंड पे वो क्या हुआ, वो मर गया। और कहा जाता है कि एक बहुत बड़ा फ्लड आया, जो कि किस वजह से, उन लोगों के झूठ की वजह से। वो कहते हैं कि खुदा का गज़ब नाजिल हुआ उन लोगों पे, और वो सब कुछ बिलोंगिंग, उनकी प्रॉपर्टी, उनके घर, उनका सब कुछ बिलोंगिंग्स जो भी वो उनकी थी ना, इनहेरिट्स चीज़ें थी, वो सब कुछ बहा के ले गया। मिस्टर ह्यूबर्ट की कब्र उस फ्लड की तबाहगारियों में सलामत रही, यानी कि सब कुछ डिस्ट्रॉय हो गया, सब कुछ बह गया, बट उस मिस्टर ह्यूबर्ट की कब्र जो थी वो वैसे से ही सलामत रही। उसकी वफ़ात के कई साल बाद इसके लोहे मज़ार पर ये क्या लिखा गया था, ये लिखा गया था कि यहाँ पे एक ऐसा इंसान तदफीन हुआ है, उस ग्रेवयार्ड में ऐसा इंसान बरिड हुआ है कि जो अपनी बेगुनाही, अपनी मासूमियत को साबित ना कर सका। वो इतना इनोसेंट मैन था कि वो अपनी मासूमियत को ज़ाहिर नहीं कर सका, बट किसने सब साबित कर दिया, उस फ्लड ने। वो क्योंकि वो फ्लड आया, वो सब कुछ बहा ले गया, उस सब कुछ उस फ्लड ने साबित कर दिया, उसका इनोसेंट होना उस फ्लड ने साबित कर दिया। So it's a very curiosity in this lesson at the end, starting to end. So okay, students, we have completed our Unit 5 translation, and okay, see you next. Thank you, and see you